टीएनपी न्यूज शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ, जहां संसद में आम बजट 2026 और 27 पेश हो रहा है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन बजट पेश कर रही हैं। लगातार 9वीं बार आम बजट पेश करती हुई नजर आएंगे। बजट में जनता को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद यहां जताई जा रही है। बड़ा अपडेट, जहां वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन 11 बजे 9वीं बार बजट पेश करती हुई नजर आएंगी। इससे पहले वो राष्ट्रपति भवन पहुंची। यहां उन्होंने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को बजट के बारे में जानकारी दी और राष्ट्रपति मुर्मू ने सीतारमन को दही चीनी भी खिलाई। इस बजट में सरकार कई बड़ी घोषणाएं भी कर सकती है, जिसको कहीं ना कहीं आम आदमी को जिससे राहत पहुंचेगी। और लगातार यह उम्मीद भी यही जताई जा रही है। कयास ये भी लगाए जा रहे हैं कि नौकरी पेशा लोगों के लिए करीब 13 लाख की इनकम टैक्स फ्री हो सकती है। और वहीं इंपोर्ट ड्यूटी घटने से भी सोने चांदी की कीमतें जो आसमान छू रही थी वो कम हो सकती हैं। और अब सीधे आपको लेकर चलते हैं लोकसभा, जहां निर्मला सीतारमन अब बजट पेश करती हुई नजर आएंगे। बता दें कि यहाँ सीतारमन जी Item number one. Sir, with your permission, I rise to lay on the table a copy each of the following papers, Hindi and English versions, under Article 281 of the Constitution, Report for 2026 to 2031, Volume 1, Main Report of the 16th Finance Commission. 2. Report for 2026-2031, Volume 2, Annexures of the 16th Finance Commission. Number 3, explanatory memorandum as to the action taken on the recommendations contained in the above report. Item number 2, माननीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन जी। Honorable Speaker, sir, on the sacred occasion of Magh Purnima and the birth anniversary of Guru Ravidas, I present the budget for the year 2026-2027. Since we assumed office 12 years ago, India's economic trajectory has been marked by stability, fiscal discipline, sustained growth, and moderate inflation. This is the result of conscious choices we have made, even in times heightened uncertainty and disruption. Our government, led by Honorable Prime Minister Modi, has decisively and consistently chosen action over ambivalence, reform over rhetoric, and people over populism. We have pursued far-reaching structural reforms, fiscal prudence and monetary stability, whilst maintaining a strong thrust on public investment. Keeping Atmanirbharta as a lodestar, we have built domestic manufacturing capacity, energy security, and reduced critical import dependencies. Simultaneously, we have ensured that citizens benefit from every action of the government, undertaking reforms to support employment generation, agricultural productivity, household purchasing power, and universal services to people. These measures have delivered a high growth rate of around 7% and helped us make substantial strides in poverty reduction and improvement in the lives of our people. Today, we face an external environment in which trade and multilateralism are imperiled and access to resources and supply chains are disrupted. New technologies are transforming production systems while sharply increasing demands on water, energy, and critical minerals. India will continue to take confident steps towards Vikasit Bharat, balancing ambition with inclusion. As a growing economy,
with expanding trade and capital needs, India must also remain deeply integrated with global markets, exporting more and attracting stable long-term investment. As I begin Part A, I want to express my gratitude to the people for standing firmly with us as we forge our way together towards becoming one of the largest economies of the world. Our aim is to transform aspiration into achievement and potential into performance as we ensure that the dividends of growth reach every farmer, the scheduled caste, the scheduled tribes, the nomads, the youth, the poor, and the women. In Vikasit Bharat Young Leaders Dialogue 2026, several innovative ideas were shared with our Prime Minister, which have inspired many of the proposals, making this a unique Yuva Shakti-driven budget. Our government's sankalp is to focus on our poor, underprivileged, and the disadvantaged. To deliver on this sankalp, and given that this is the first budget prepared in Kartavya Bhavan, we are inspired by three Kartavya. Our first Kartavya is to accelerate and sustain economic growth by enhancing productivity and competitiveness and building resilience to volatile global dynamics. Our second Kartavya is to fulfill aspirations of our people and build their capacity, making them strong partners in India's path to prosperity. Our third Kartavya, aligned with our vision of Sabka Saath, Sabka Vikas, is to ensure that every family, community, region, and sector has access to resources, amenities, and opportunities for meaningful participation. This threefold approach requires a supportive ecosystem. The first requirement is to sustain the momentum of structural reforms, continuous, adaptive, and forward-looking. Second, a robust and resilient financial sector is central to mobilizing savings, allocating capital efficiently, and managing risks. Third, cutting-edge technologies, including AI applications, can serve us as force multipliers for better governance. Reform Express. Our government has undertaken comprehensive reforms towards creating employment, boosting productivity, and accelerating growth. After the Prime Minister's announcement on Independence Day in 2025, over 350 reforms have been rolled out. This includes GST simplification, notification of labor codes, and rationalization of mandatory quality control orders. High-level committees have been formed, and in parallel, the central government is working with the state governments on deregulation and reducing compliance requirements. The Reform Express is well on its way and will maintain its momentum to help us fulfill our Kartavya. I now move to specific proposals. Under our first Kartavya, to accelerate and sustain economic growth, I propose interventions in 6 areas. 1. Scaling up manufacturing in 7 strategic and frontier sectors. 2. Rejuvenating legacy industrial sectors. 3. Creating champion MSMEs. 4. Delivering a powerful push for infrastructure. 5. Ensuring long-term security and stability. And 6. Developing city economic regions.
scaling up of manufacturing in 7 strategic and frontier sectors. Biopharma Shakti, meaning biopharma strategy for health advancement through knowledge, technology, and innovation. India's disease burden is observed to be shifting towards non-communicable diseases like diabetes, cancer, and autoimmune disorders. Biologic medicines are key to longevity and quality of life at affordable costs. To develop India as a global biopharma manufacturing hub, I propose the Biopharma Shakti with an outlay of 10,000 crores over the next 5 years. This will build the ecosystem for domestic production of biologics and biosimilars. The strategy will include a biopharma-focused network with 3 new national institutes of pharmaceutical education and research, popularly known as NIPERs, and upgrading 7 existing ones. It will also create a network of 1,000 accredited India clinical trials sites. We propose to strengthen the Central Drug Standard Control Organization to meet global standards and approve timeframes through approval timeframes through a dedicated scientific review cadre and specialists. India's semiconductor mission 1.0 expanded India's semiconductor sector capabilities. Building on this, we will launch ISM 2.0 to produce equipment and materials, design full-stack Indian IP, and fortify supply chains. We will also focus on industry-led research and training centers to develop technology and skilled workforce. The Electronics Components Manufacturing Scheme, launched in April 2025, with an outlay of 22,919 crores, already has investment commitments at double the targets. We propose to increase the outlay to 40,000 crores to capitalize on this momentum. A scheme for rare earth permanent magnets was launched in 2025 November. We now propose to support the mineral-rich states of Odisha, Kerala, Andhra Pradesh, and Tamil Nadu to establish dedicated rare earth corridors to promote mining, processing, research, and manufacturing. To enhance domestic chemical production and reduce import dependency, we will launch a scheme to support states in establishing 3 dedicated chemical parks through challenge route on a cluster-based plug-and-play model. Strong capital goods. Strong capital goods capability is a determinant of productivity and quality across different sectors. Towards building this capacity, I propose the following. High-tech tool rooms will be established by central public sector enterprises at 2 locations as digitally enabled automated service bureaus that locally design, test, and manufacture high-precision components at scale and at lower cost. 2. A scheme for enhancement of construction and infrastructure equipments will be introduced to strengthen domestic manufacturing of high value and technologically advanced CIE. This can range from lifts in a multi-storied apartment or firefighting equipment in multiplexes, large or small, and to tunnel boring equipments for building metros and high-altitude roads. I also propose a scheme for container manufacturing to create a globally competitive container manufacturing ecosystem with a budgetary allocation of 10,000 crores over a 5-year period.
For the labor-intensive textile sector, I propose an integrated program with 5 subparts. 1. The National Fiber Scheme for self-reliance in natural fibers, such as silk, wool and jute, man-made fibers, and new-age fibers. Textile expansion and employment scheme to modernize traditional clusters with capital support for machinery, technology upgradation, and common testing and certification centers. 3. The National Handloom and Handicraft Program to integrate and strengthen existing schemes and ensure targeted support for weavers and artisans. Tex Eco initiative to promote globally competitive and sustainable textiles and apparels. Samarth 2.0 to modernize the upgrade the textile skilling ecosystem through collaboration with industry and academic institutions. Further, I propose to set up mega textile parks in challenge mode. They can also focus on bringing value addition to technical textiles. I propose to launch the Mahatma Gandhi Gram Swaraj initiative to strengthen khadi, handloom and handicrafts. This will help in global market linkage and branding. It will streamline and support training, skilling, quality of process and production. This will benefit our weavers, village industries, One District, One Product ODOP initiative, and also our rural youth. India has the potential to emerge as a global hub for high quality, affordable sports goods. I propose a dedicated initiative for sports goods that will promote manufacturing, research, and innovation in equipment design as well as material sciences. Rejuvenation of legacy industrial clusters. I propose to introduce a scheme to revive 200 legacy industrial clusters to improve their cost competitiveness and efficiency through infrastructure and technology upgradation. Creating champion SMEs and supporting micro enterprises. Recognizing MSMEs as a vital engine of growth, I propose a three-pronged approach to help them grow as champions. Equity support. I propose to introduce a dedicated 10,000 crores SME growth fund to create future champions, incentivizing enterprises based on select criteria. I also propose to top up the Self-Reliant India Fund set up in 2021 with 2,000 crores to continue support to micro enterprises and maintain their access to risk capital. Liquidity support. With TREDS, more than 7 lakh crore has been made available to MSMEs. To leverage its full potential, I propose 4 measures. 1. Mandate TREDS as the transaction settlement platform for all purchases from MSMEs by CPSEs, serving as a benchmark for other corporates. 2. Introduce a credit guarantee support mechanism through CGT-MSE for invoice discounting on TREDS platform. 3. Link GEM with TREDS for sharing information with financiers about government purchases from MSMEs, encouraging cheaper and quicker financing. 4. Introduce TREDS receivables as asset-backed securities, helping develop a secondary market, enhancing liquidity and settlement of transactions. Professional support. Government will facilitate professional institutions
such as the ICAI, ICSI, ICMAI, to design short-term modular courses and practical tools to develop a cadre of corporate mitras, especially in Tier 2 and Tier 3 towns. These accredited para-professionals will help MSMEs meet compliance requirements at affordable costs. Infrastructure. During this past decade, our government has undertaken several initiatives for large-scale enhancement of public infrastructure, including through new financing instruments such as Infrastructure Investment Trust (InvITs) and Real Estate Investment Trust (REITs), and institutions like NIIF and NABFID. We shall continue to focus on developing infrastructure in cities with over 5 lakh population, that is Tier 2, Tier 3 cities, which have expanded to become growth centers. Public capital expenditure has increased manifold from 2 lakh crore in 2014-15 to an allocation of 11.2 lakh crore in BE 25-26. In this coming year, that is financial year 2026-27, I propose to increase it to 12.2 lakh crores to continue the momentum. To strengthen the confidence of private developers regarding risks during infrastructure development and construction phase, I propose to set up an infrastructure risk guarantee fund to provide prudentially calibrated partial credit guarantee to lenders. Over the years, REITs have emerged as a successful instrument for asset monetization. I propose to accelerate recycling of significant real estate assets of the CPSEs through the setting up of dedicated REITs. To promote environmentally sustainable movement of cargo, I propose to 1. Establish new dedicated freight corridors connecting Dankuni in the east to Surat in the west. Operationalize 20 new national waterways over the next 5 years, starting with National Waterways 5 in Orissa to connect mineral-rich areas of Talcher and Angul and industrial centers like Kalinga Nagar to the ports of Paradeep and Dhamra. Training institutes will be set up as regional centers of excellence for development of required manpower for these waterways. This will benefit youth in the entire stretch of the waterways to train and acquire skills. Further, a ship repair ecosystem catering to inland waterways will also be set up at Varanasi and Patna. And C, launch a coastal cargo promotion scheme for incentivizing a modal shift from rail to road to increase the share of inland waterways and coastal shipping from 6% to 12% by 2047. To enhance last mile and remote connectivity and promote tourism, I propose to give incentives to indigenize manufacturing of seaplanes. A seaplane VGF scheme will be also introduced to provide support for operations. Carbon capture, utilization and storage. Aligning with the roadmap launched in December 2025, the carbon capture, utilization and storage technologies at scale will achieve higher readiness and in end-use application across 5 industrial sectors, including power, steel, cement, refineries, and chemicals. An outlay of 20,000 crore is proposed over the next 5 years for this purpose. City economic regions.
Cities are India's engines of growth, innovation and opportunities. We shall now focus on Tier 2, Tier 3 cities and even temple towns, which need modern infrastructure and basic amenities. This budget aims to further amplify the potential of cities to deliver the economic power of agglomerations by mapping city economic regions based on their specific growth drivers. An allocation of 5,000 crore per CER over 5 years is proposed for implementing their plans through a challenge mode with a reform-cum-result-based financing mechanism. In order to promote environmentally sustainable passenger systems, we will develop 7 high-speed rail corridors between cities as growth connectors, namely Mumbai to Pune, Pune to Hyderabad, Hyderabad to Bengaluru, Hyderabad to Chennai, Chennai to Bengaluru, Delhi to Varanasi, Varanasi to Siliguri. Financial sector. The Indian banking sector today is characterized by strong balance sheet, historic highs in profitability, improved asset quality, and coverage exceeding 98% of villages in the country. At this juncture, we are well placed to futuristically evaluate the measures needed to continue on the path of reform-led growth of this sector. I propose setting up a high-level committee on banking for Vikasit Bharat. High-level committee on banking for Vikasit Bharat to comprehensively review the sector and align it with India's next phase of growth, while safeguarding financial stability, inclusion, and consumer protection. The vision for NBFCs for Vikasit Bharat has been outlined with clear targets for credit disbursement and technology adoption in order to achieve scale and improve efficiency in the public sector NBFCs. As a first step, it is proposed to restructure the Power Finance Corporation and Rural Electrification Corporation. I propose a comprehensive review of the foreign exchange management non-debt instruments rules to create a more contemporary, user-friendly framework for foreign investments consistent with India's evolving economic priorities. Corporate bond market. I propose to introduce a market-making framework with suitable access to funds and derivatives on corporate bond indices. I also propose to introduce total return swaps on corporate bonds. Municipal bonds. To encourage the issuance of municipal bonds of higher value by larger cities, I propose an incentive of 100 crore rupees for a single bond issuance. 100 crore rupees for a single bond issuance of more than 1,000 crore. The current scheme under Amrit which incentivizes issuances up to 200 crores only, will also continue to support smaller and medium towns. That will also continue to support the smaller and medium towns. Ease of doing business. Individual persons resident outside India, PROI, will be permitted to invest in equity instruments of listed Indian companies through the Portfolio Investment Scheme. It is also proposed to increase the investment limit for an individual PROI under the scheme from 5% to 10%, with an overall investment limit for all individual PROIs to 24% from the current
10%. Emerging technologies including AI. 21st century is technology-driven. Adoption of technology is for the benefit of all people. Farmers in the field, women in STEM, youth keen to upskill, and Divyangjan to access newer opportunities. The government has taken several steps to support new technologies through AI Mission, National Quantum Mission, Anusandhan National Research Fund, and Research and Development and Innovation Fund. Our second kartavya is to fulfill aspirations and build capacities. Close to 25 crore individuals have come out of multi-dimensional poverty through a decade of our government's sustained and reform-oriented efforts. Our government has therefore decided to place a renewed emphasis on the service sector to provide a pathway to fulfilling aspirations of a youthful India with the following measures. I propose to set up a high-powered Education to Employment and Enterprises Standing Committee to recommend measures that focus on services sector as a core driver of Vikasit Bharat. This will make us a global leader in services with a 10% global share by 2047. The committee will prioritize areas to optimize the potential for growth, employment, and exports. They will also assess the impact of emerging technologies, including AI, on jobs and skill requirements and propose measures thereof. To create a range of skilled career pathways, a new range of skilled career pathways for our youth, I propose interventions in the following sectors. Health. Existing institutions for allied health professionals will be upgraded and new AHP institutions established in private and government sectors. This will cover 10 selected disciplines, including optometry, radiology, anesthesia, OT technology, applied psychology and behavioral health, and add 1 lakh AHPs over the next 5 years. A strong care system covering geriatric and allied care services will be built. A variety of NSQF-aligned programs will be developed to train multi-skilled caregivers, combining core care and allied skills such as wellness, yoga, and operation of medical assistive devices. In the coming year, 1.5 lakh caregivers will be trained. Hubs for medical value tourism. To promote India as a hub for medical tourism services, I propose to launch a scheme to support states in establishing 5 regional medical hubs in partnership with the private sector. These hubs will serve as integrated healthcare complexes that combine medical, educational, and research facilities. They will have Ayush centers, medical value tourism facilitation centers, and infrastructure for diagnostics, post-care, and rehabilitation. These hubs will provide diverse opportunities, job opportunities, for health professionals, including doctors and AHPs. Ancient Indian yoga, already respected in several parts of the world, was given a mass global recognition when Honorable Prime Minister took it to the UN. Post-COVID, Ayurveda gained a similar global acceptance and recognition. Exporting quality Ayurveda products helps farmers who grow the herbs and youth who process the products.
To meet growing global demand, a few more steps are being taken. I propose to, 1, set up 3 new All India Institutes of Ayurveda. 2, upgrade Ayush pharmacies and drug testing labs for higher standards of certification ecosystem and make available more skilled personnel. 3, upgrade the WHO Global Traditional Medicine Center in Jamnagar to bolster evidence-based research, training and awareness for traditional medicine. Animal husbandry. Livestock contributes to close to 16% of farm income, including of poor and marginal households. To scale up availability of veterinary professionals by more than 20,000, I propose to roll out a loan-linked capital subsidy support scheme for establishment of veterinary and para-veterinary colleges, veterinary hospitals, diagnostic laboratories, and breeding facilities in private sector. Collaboration between Indian and foreign institutions will also be facilitated. Orange economy. India's animation, visual effects, gaming and comics sector, ABGC sector, is a growing industry projected to require 2 million professionals by 2030. I propose to support the Indian Institute of Creative Technologies, Mumbai, in setting up ABGC content creator labs in 15,000 secondary schools all over the country and 500 colleges. The Indian design industry is expanding rapidly, and yet there is a shortage of Indian designers. I propose to establish, through Challenge Route, a new National Institute of Design to boost design education and development in the eastern region of India. Education. Our government will support states through Challenge Route in creating 5 university townships in the vicinity of major industrial and logistics corridors. These planned academic zones will host multiple universities, colleges and research institutions, skill centers and residential complexes. In higher education, STEM institutions, prolonged hours of study and laboratory work pose some challenges for girl students. Through VGF, Viability Gap Funding and capital support, 1 girls' hostel will be established in every district. To promote astrophysics and astronomy via immersive experiences. 4 telescope infrastructure facilities will be set up or upgraded. The National Large Solar Telescope, the National Large Optical Infrared Telescope, the Himalayan Chandra Telescope, and the Cosmos 2 Planetarium. Tourism. The tourism sector has the potential to play a large role in the employment generation, forex earnings, and expanding the local economy. I propose to set up a National Institute of Hospitality by upgrading the existing National Council for Hotel Management and Catering Technology. It will function as a bridge between academia, industry, and government. I also propose a pilot scheme for upskilling 10,000 guides in 20 iconic tourist sites through a standardized, high-quality, 12-week training course in hybrid mode in collaboration with the, Indian Institute of Management.
a national destination digital knowledge grid will be established to digitally document all places of significance, cultural, spiritual, and heritage. This initiative will create a new ecosystem of jobs for local researchers, historians, content creators, and technology partners. India has the potential and opportunity to offer world-class trekking and hiking experience. We will develop ecologically sustainable mountain trails in Himachal Pradesh, Uttarakhand, and Jammu Kashmir. Also in Araku Valley in the Eastern Ghats and Podigai Malai in the Western Ghats. Turtle trails along key nesting sites in the coastal areas of Odisha, Karnataka, and Kerala. And 3 bird watching trails along the Pulikat Lake in Andhra Pradesh, Tamil Nadu. It's on the border. Under the visionary leadership of Honorable Prime Minister, we established the International Big Cat Alliance in 2024. This year, India is hosting the first ever Global Big Cat Summit, where heads of governments and ministers from 95 range countries will deliberate on collective strategies for conservation. Heritage and culture tourism. I propose to develop 15 archaeological sites, including Lothal, Dolavira, Rakhi Gadi, Adichanallu, Saranath, Hastinapur, and Leh Palace into vibrant experiential cultural destinations. Excavated landscapes will be open to the public through curated walkways. Immersive storytelling skills and technologies will be introduced to help conservation labs, interpretation centers, and guides. The sports sector provides multiple means of employment, skilling, and job opportunities. Taking forward the systematic nurturing of sports talent, which is set in motion through the Khelo India program earlier, I propose to launch a Khelo India mission to transform the sports sector over the next decade. The mission will facilitate an integrated talent development pathway supported by training centers, which are foundational, intermediate, and elite levels. B, systematic development of coaches and support staff. C, integration of sports science and technology. D, competitions and leagues to promote sports culture and provide platforms. And E, development of sports infrastructure for training and competition. Our third Kartavya aligns with our vision of Sabka Saath, Sabka Vikas towards Vikasit Bharat. This requires targeted efforts for 1, increasing farmer incomes through productivity enhancement and entrepreneurship, with special attention to small and marginal farmers. B, empowering Divyangjan through access to livelihood opportunities, training, and high-quality assistive devices. C, empowering the vulnerable to access mental health and trauma care. D, focus on the Purvodaya states and the Northeast region to accelerate development and employment opportunities. Fisheries. We will undertake initiatives for integrated development of 500 reservoirs and Amrit Sarovars. 2, strengthen the fisheries value chain in coastal areas and enable market linkages involving startups and women-led groups together with fish farmer producer organizations. Animal husbandry. To provide quality employment opportunities in rural and peri-urban areas, we will support the animal husbandry sector in entrepreneurship development through A credit-linked subsidy program, B,
scaling up and modernization of livestock enterprises. C, enhanced creation of livestock, dairy and poultry. I'll read that again. Enhanced creation of livestock, dairy and poultry focused integrated value chains. And D, encourage creation of livestock farmer producer organizations. High value agriculture. To diversify farm outputs, increase productivity, enhance farmers' incomes, and create new employment opportunities, we will support high value crops such as coconut, sandalwood, cocoa, cashew in the coastal areas, agar trees in northeast, and nuts such as almonds, walnuts, and pine nuts in our hilly regions. These, all of them, will be supported. India is the world's largest producer of coconuts. About 30 million people, including nearly 10 million farmers, depend on coconuts for their livelihood. To further enhance competitiveness in coconut production, I propose a coconut promotion scheme to increase production and enhance productivity through various interventions, including replacing and non-productive trees with new saplings or plants or varieties in major coconut growing states. A dedicated program is proposed for Indian cashew and cocoa to make India self-reliant in raw cashew and coconut production and processing, enhance export competitiveness, and transform Indian cashew and Indian cocoa into premium global brands by 2030. Sandalwood. Sandalwood is closely linked to India's social and cultural heritage. Our government will partner with state governments to promote focused cultivation and post-harvest processing to restore the glory of the Indian sandalwood ecosystem, to rejuvenate old, low-yielding orchards, and expand high-density cultivation of walnuts, almonds, and pine nuts. We will support a dedicated program to enhance farmer incomes and in bringing value addition by engaging youth. Bharat Vistar, that is virtually integrated system to access agricultural resources. I propose to launch Bharat Vistar, a multilingual AI tool that shall integrate the AgriStack portals and the ICAR package on agricultural practices with AI systems. This will enhance farm productivity, enable better decisions for farmers, and reduce risk by providing customized advisory support. She-Marts for rural women-led enterprises. Building on the success of Lakpati Didi program, I propose to help women take the next step from credit-linked livelihoods to being owners of enterprises. Self-help entrepreneur, She-Marts will be set up as community-owned retail outlets within the cluster-level federations through enhanced and innovative financing instruments. Empowering Divyangjan. Divyangjan Kaushal Yojana. Information technology, AVGC sectors, hospitality and food and beverages sectors often offer task-oriented and process-driven roles which are suitable for Divyangjan. We will ensure dignified livelihood opportunities through industry-relevant and customized training specific to each Divyangjan group. दिव्यांग सहारा आतिथ्य और खाद्य एवं पेय क्षेत्र कार्य उन्मुखी तथा प्रक्रिया आधारित भूमिका प्रदान करते हैं जो दिव्यांगजनों के लिए उपयुक्त है। हम प्रत्येक दिव्यांग समूह के लिए उद्योग संगत और अनुकूल विशिष्ट प्रशिक्षण के माध्यम से सम्मानजनक आजीविका के अवसर सुनिश्चित करेंगे।
दिव्यांग सहारा योजना सभी पात्र दिव्यांगजनों के लिए उच्च गुणवत्ता वाले सहायक उपकरणों तक समय से पहुंच एक मूलभूत आवश्यकता है। मैं पहला, सहायक उपकरणों का उत्पादन बढ़ाने, अनुसंधान और विकास तथा एआई एकीकरण में निवेश के लिए भारतीय कृत्रिम अंग निर्माण निगम ALIMCO को सहायता उपलब्ध कराने। दूसरा, पीएम दिव्यासा केंद्रों को मजबूत करने और आधुनिक रिटेल स्टाइल केंद्रों के रूप में सहायक प्रौद्योगिकी मार्ट की स्थापना में सहायता का प्रस्ताव करती हूं, जहां दिव्यांगजन और वरिष्ठ नागरिक सहायक उत्पादों को देख, परख और खरीद सकें। मानसिक स्वास्थ्य और ट्रॉमा केयर के लिए हमारी वचनबद्धता की पुनः पुष्टि। उत्तर भारत में मानसिक स्वास्थ्य के लिए कोई राष्ट्रीय संस्थान नहीं है, इसलिए हम निमहांस 2 की स्थापना करेंगे और रांची तथा तेजपुर में राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य संस्थानों का क्षेत्रीय focus on Purvodaya states and northeastern regions. Purvodaya, I propose the development of an integrated East Coast industrial corridor with a well-connected node at Durgapur, creation of 5 tourism destinations in 5 Purvodaya states, and the provision of 4,000 e-buses. Buddhist sites in northeastern region. The northeastern region is a civilizational confluence of Theravada and Mahayana or Vajrayana traditions. I propose to launch a scheme for development of Buddhist circuits in Arunachal Pradesh, Sikkim, Assam, Manipur, Mizoram, and Tripura. The scheme will cover preservation of temples and monasteries, pilgrimage interpretation centers, connectivity, and pilgrim amenities. 16th Finance Commission. On 17th November 2025, the 16th Finance Commission submitted its report to the President. As mandated under Article 281 of the Constitution, the government is to lay the report along with the explanatory memorandum on the action taken report on the recommendations of the Commission in Parliament, which, Sir, Honourable Speaker, you've allowed me to do at the commencement of this session. The government has accepted the recommendation of the Commission to retain the vertical share of devolution at 41%. As recommended by the Commission, I have provided 1.4 lakh crores of rupees to the states for the year 2026-2027 as Finance Commission grants. These include rural and urban local body and disaster management grants. Fiscal consolidation. Government has been delivering on our fiscal commitments consistently without compromising on social needs. To strive towards accepted standards of fiscal management in Budget 25-26, I had indicated that the central government would target reaching a debt to GDP ratio of 50 plus or minus 1% by 2030-31. In line with this, the debt to GDP ratio is estimated to be 55.6% of GDP in BE 26-27. compared to 56.1% of GDP in RE 25-26. A declining debt to GDP ratio will gradually free up resources for priority sector lending and expenditure by reducing the outgo on interest payments. One of the main operational instruments for debt targeting is the fiscal deficit. I am happy to inform this august House that I fulfilled my commitment made in 2021-2022 to reduce fiscal deficit below 4.5% of GDP by 25-26. In RE 25-26, the fiscal deficit has been estimated at par with BE of 2025-26
at 4.4% of GDP. In line with the new fiscal prudence path of debt consolidation, the fiscal deficit in BE 26-27 is estimated to be 4.3% of the GDP. The revised estimates of the non-debt receipts are 34 lakh crore rupees, of which the centre's net tax receipts are 26.7 lakh crore. The revised estimate of the total expenditure is 49.6 lakh crore rupees, of which the capital expenditure is about 11 lakh crores. Budget estimates 2026 to 2027. Coming to 26-27, the non-debt receipts and the total expenditure are estimated as 36.5 lakh crore and 53.5 lakh crore respectively. The centre's net tax receipts are estimated at 28.7 lakh crore rupees. To finance the fiscal deficit, the net market borrowings from dated securities are estimated at 11.7 lakh crore rupees. The balance financing is expected to come from small savings and other sources. The gross market borrowings are estimated at 17.2 lakh crore rupees. I'll now move to Part B. Part B, direct taxes. Honorable Speaker, sir, I now present my proposals on direct taxes. New Income Tax Act. In July 2024, I announced a comprehensive review of the Income Tax Act 1961. This was completed in a record time, and the Income Tax Act 2025 will come into effect from 1st April 2026. The simplified income tax rules and forms will be notified shortly, giving adequate time to taxpayers to acquaint themselves with its requirements. The forms have been redesigned such that ordinary citizens can comply without difficulty. Ease of living. I propose that any interest awarded by the Motor Accident Claims Tribunal to a natural person will be exempt from income tax, and any TDS on this account will be done away with. I propose to reduce TCS rate on the sale of overseas tour program package from the current 5% and 20% to 2% without any stipulation of amount. I propose to reduce TCS rate for pursuing education and for medical purposes under the Liberalized Remittance Scheme, popularly known as LRS, from 5% to 2%. Supply of manpower services is proposed to be specifically brought within the ambit of payment to contractors for the purpose of TDS to avoid ambiguity. Thus, TDS on these services will be at the rate of either 1% or 2% only. I propose a scheme for small taxpayers, wherein a rule-based automated process will enable obtaining a lower or nil deduction certificate instead of filing an application with the assessing officer. For the ease of taxpayer holding securities in multiple companies, I propose to enable depositories to accept Form 15G or Form 15H from the investor and provide it directly to various relevant companies. I propose to extend time available for revising returns from 31st December to up to 31st March with the payment of a nominal fee. I also propose to stagger the timeline for filing of tax returns. Individuals with ITR 1 and ITR 2 returns will continue to file till 31st July,
and non-audit business cases or trusts are proposed to be allowed time till 31st August. TDS on sale of immovable property by a non-resident is proposed to be deducted and deposited through resident buyers and his or her PAN-based challan instead of requiring a TAN, which is a temporary accounting number. To address practical issues of small taxpayers like students, young professionals, tech employees, relocated NRIs, and such others, I propose to introduce a one-time 6-month foreign asset disclosure scheme for these taxpayers to disclose income or assets below a certain size. This scheme would be applicable for two categories of taxpayers, namely, A, who did not disclose their overseas income or assets, and B, who disclosed their overseas income and or paid due tax but could not declare the asset acquired. For category A, the limit of undisclosed income or asset is proposed to be up to 1 crore rupees. They need to pay 30% of fair market value of asset or 30% of undisclosed income as tax and 30% as additional income tax in lieu of penalty and would thereby get immunity from prosecution. For category B, asset value is proposed to be up to 5 crore rupees. Here, immunity from both penalty and prosecution will be available with a payment of fee of 1 lakh rupees. Rationalizing penalty and prosecution. Multiplicity of proceedings are hindrance to the ease of doing business. I propose to integrate assessment and penalty proceedings by way of a common order for both. There will be no interest liability on the taxpayer on the penalty amount for the period of appeal before the first appellate authority, irrespective of the outcome of appeal process. Further, quantum of prepayment is being reduced from 20% to 10% and will continue to be calculated only on core tax demand. As an additional measure for reducing litigation, I propose to allow taxpayers to update their returns even after reassessment proceedings have been initiated, and an additional 10% tax rate over and above the rate applicable for the relevant year. The assessing officer will then use only this updated return in his proceedings. There is already a framework for immunity from penalty and prosecution in the cases of underreporting. I propose to apply this framework for immunity to misreporting too. However, in such a case, the taxpayer will need to pay 100% of the tax amount as an additional income tax over and above the tax and interest due. Penalties for certain technical defaults, such as failure to get accounts audited, non-furnishing of transfer pricing audit report, and default in furnishing statement for financial transactions are proposed to be converted into fee. I propose to rationalize prosecution framework under Income Tax Act while maintaining a careful balance for deterrence in some serious offence. Non-production of books of account and documents and requirement of TDS payment where payment is made in kind are being decriminalized. Further, minor offences will attract fine only. The remaining prosecutions will be graded commensurate with the quantum of offence. They will entail only simple imprisonment with maximum imprisonment reduced to 2 years and power to courts to convert even those into fines. There is no penalty. There is no penalty presently for non-disclosure of non-immovable foreign assets with aggregate value less than 20 lakh rupees. I propose
to also provide them with immunity from prosecution with retrospective effect from 1/10/2024. Cooperatives. Deduction is already allowed to a primary cooperative society engaged in supplying milk, oilseeds, fruits or vegetables raised or grown by its members. I propose to extend this deduction to also include supply of cattle feed and cotton seed produced by its members. I propose to allow inter-cooperative society dividend income as deduction under the new tax regime to the extent it is further distributed to its members. I further propose to allow exemption for a period of 3 years to dividend income received by a notified national cooperative federation on their investments made in companies up to 31/1/2026. This exemption would be allowed only for dividends further distributed to its member cooperatives. Supporting IT sector as India's growth engine. India is a global leader in software development services, IT-enabled services, knowledge process outsourcing services, and contract R&D services relating to software development. These businesses and their segments are quite interconnected with each other. All these services are proposed to be clubbed under a single category of information technology services with a common safe harbor margin of 15.5% applicable to all. The threshold for availing safe harbor for IT services is being enhanced substantially from 300 crore rupees to 2,000 crore rupees. Safe harbor for IT services shall be approved by an automated rule-driven process without any need for tax officer to examine and accept the application. Once applied by an IT services company, the same safe harbor can be continued for a period of 5 years at a stretch at its choice. For IT services companies who want to conclude advanced pricing agreement, APA, I propose to fast-track unilateral APA process for IT services and endeavor to conclude it within a period of 2 years. The period of 2 years can be extended by a further period of 6 months on taxpayers' request. I propose to extend the facility of modified returns available to the entity entering APA to its associated entities also. Attracting global business and investment. Recognizing the need to enable critical infrastructure and boost investment in data centers, I propose to provide tax holiday till 2047 to any foreign company that provides cloud services to customers globally by using data center services from India. It will, however, need to provide services to Indian customers through an Indian reseller entity. I also propose to provide a safe harbor of 15% on cost in case the company providing data center services from India is a related entity. To harness the efficiency of just-in-time logistics for electronic manufacturing, I propose to provide safe harbor to non-residents for component warehousing in a bonded warehouse at a profit margin of 2% of the invoice value. The resultant tax of about 0.7% will be much lower than in competing jurisdictions. To provide fillip to toll manufacturing in India, I propose to provide exemption from income tax for 5 years to any non-resident who provides capital goods, equipment, or tooling to any toll manufacturer in a bonded zone. To encourage vast pool of global talent to work in India for a longer period of time, I propose to provide exemption to global, non-India sourced income of a non-resident expert for a
stay period of 5 years under notified schemes. I propose to provide exemption from minimum alternate tax, the MAT, to all non-residents who pay tax on presumptive basis. Tax administration. I propose to constitute a joint committee of Ministry of Corporate Affairs and Central Board of Direct Taxes for incorporating the requirements of income computation and disclosure standards, the ICDS, in the Indian Accounting Standards, IND AS itself. Separate accounting requirement based on ICDS will be done away with from the tax year 27-28. To support Prime Minister Modi's vision of homegrown accounting and advisory firms to become global leaders, I propose to rationalize the definition of accountant for the purposes of safe harbor rules. Other tax proposals. Change in taxation of buyback was brought in to address the improper use of buyback route by promoters. In the interest of minority shareholders, I propose to tax buyback for all types of shareholders as capital gains. However, to disincentivize misuse of tax arbitrage, promoters will pay an additional buyback tax. This will make effective tax 22% for corporate promoters. For non-corporate promoters, the effective tax will be 30%. TCS rate for sellers of specific goods, namely alcoholic liquor, scrap, and minerals, will be rationalized to 2%, and that on tendu leaves will be reduced from 5% to 2%. I propose to raise the STT on futures to 0.05% from the present 0.02%. STT on options premium and exercise of options are both proposed to be raised to 0.15% from the present rate of 0.1% and 0.125% respectively. We reformed the taxation landscape for corporates in 2019 by providing them a simplified regime with lower tax rate so that they could productively focus on business rather than on claim of deductions and exemptions. To encourage companies to shift to the new regime, set off of brought forward MAT credit, minimum alternate tax credit, is proposed to be allowed to companies only in the new regime. Set off using available MAT credit is proposed to be allowed to an extent of 1/4 of the tax liability in the new regime. MAT is proposed to be made final tax, so there will be no further credit accumulation from 1st April 2026. In line with this change, the rate of final tax is being reduced to 14% from the current MAT rate of 15%. The brought forward MAT credit of taxpayers accumulated till 30th March 2026 will continue to be available to them for set-off as above. Indirect taxes. I shall now take up proposals related to indirect taxes. My proposals for customs and central excise aim to further simplify the tariff structure, support domestic manufacturing, promote export competitiveness, and correct inversion in duty. To continue weeding out long-continuing customs duty exemptions, I propose to remove certain exemptions on items which are being manufactured in India or where the imports are negligible. Similarly, to further simplify the process of ascertaining the rate of duty applicable on a particular item, I propose to incorporate certain effective rates
in various customs notifications to the tariff schedule itself. I shall now take up sector-specific proposals. Promotion of exports of marine, leather, and textile products. I propose to increase the limit for duty-free imports of specified inputs used for processing seafoods for export from the current 1% to 3% of FOB value of the previous year's export turnover. I also propose to allow duty-free imports of specified inputs, which is currently available for exports of leather or synthetic footwear, to exports of shoe uppers as well. I propose to extend the time period for export of final product from the existing 6 months to 1 year for exporters of leather or textile garments, leather or synthetic footwear, and other leather products. Energy transition and security. I propose to extend the basic customs duty exemption given to capital goods used for manufacturing lithium-ion cells for batteries to those used for manufacturing lithium-ion cells for battery energy storage systems also. I propose to exempt basic customs duty on import of sodium antimonate for use in manufacture of solar glass. Nuclear power. I propose to extend the existing basic customs duty exemption on imports of goods required for nuclear power projects till the year 2035 and expand it for all nuclear plants irrespective of their capacity. Critical minerals. It is proposed to provide basic customs duty exemption to the import of capital goods required for the processing of critical minerals in India. Biogas blended CNG. I propose to exclude the entire value of biogas while calculating the central excise duty payable on biogas blended CNG. Civil and defense aviation. I propose to exempt basic customs duty on components and parts required for the manufacture of civilian training and other aircrafts. It is proposed to exempt basic customs duty on raw materials imported for the manufacture of parts of aircraft to be used in maintenance, repair, or overall requirements by units in the defense sector. Electronics. To deepen value addition in the consumer electronics sector, I propose to exempt basic customs duty on specified parts used in the manufacture of microwave ovens. Special economic zone. To address the concerns arising about utilization of capacity by manufacturing units in the special economic zones due to global trade disruptions, I propose as a special one-time measure to facilitate sales by eligible manufacturing units in SEZs to the domestic tariff area at concessional rates of duty. The quantity of such sales will be limited to a prescribed proportion of their exports. Necessary regulatory changes will be undertaken to operationalize the measures while ensuring level playing field for the units working in the DTA. Ease of living. To rationalize the customs duty structure for goods imported for personal use, I propose to reduce the tariff rate on all dutiable goods imported for personal use from 20% to 10%. To provide relief to patients, particularly those suffering from cancer, I propose to exempt basic customs duty on 17 drugs or medicines. I propose also to add 7 more rare diseases for the purposes of exempting import duties
on personal imports of drugs, medicines, and food for special medical purposes used in their treatment. Customs process. India's role and share in the global trade is poised for a major leap in line with our ambition and journey towards Vikasit Bharat. In this regard, I propose many measures for custom processes to have minimal intervention for smoother and faster movement of goods and greater certainty to the trade. Trust-based systems. I propose to enhance duty deferral period for Tier 2 and Tier 3 authorized economic operators, known as AEOs, from 15 days to 30 days. I propose to provide eligible manufacturer importers the same duty deferral facility. This should encourage them to get themselves accredited as a full-fledged Tier 3 AEO in due course. To provide greater certainty and for better business planning, I propose to extend validity period of advance ruling binding on customs from the present 3 years to 5 years. In the spirit of the whole of government approach, government agencies will be encouraged to leverage AEO accreditation for preferential treatment in clearing their cargo. Regular importers with trusted long-standing supply chains will be recognized in the risk system so that the need for verification of their cargo every time can be minimized. Export cargo using electronic sealing. Export cargo using electronic sealing will be provided through clearance from the factory premises to the ship. For import of goods not needing any compliance, filing of bill of entry by a trusted importer and arrival of goods will automatically notify customs for completing their clearance formalities. This will enable goods to be released immediately on arrival. The customs warehouse framework will be transformed into a warehouse operator-centric system with a self-declarations, electronic tracking, and risk-based audit. These reforms will move away from the current system of officer-dependent approvals and reduce transaction delays and compliance costs. Ease of doing business. Approvals required for cargo clearance from various government agencies will be seamlessly processed through a single and interconnected digital window by the end of the financial year. Processes involved in clearance of food, drugs, plant, and animal and wildlife products, accounting for about 70% of interdicted cargo, will be operationalized on this system by April 2026 itself. For goods not having any compliance requirement, clearance will be done by customs immediately after online registration is completed by the importer, subject to the payment of duty. Customs integrated system will be rolled out in 2 years as a single integrated and scalable platform for all customs processes. Utilization of non-intrusive scanning with advanced imaging and AI technology for risk assessment will be expanded in a phased manner with the objective to scan every container across all the major ports. New export opportunities to support Indian fishermen to fully harness the economic value of marine resources beyond our territorial waters. The following measures will be taken. A. Fish catch by an Indian fishing vessel in exclusive economic zone or on the high seas will be made free of duty. Landing of such fish on foreign port will be treated as export of goods. Safeguards will be put in place to prevent misuse during fish catch, transit, or transshipment.
to support aspirations of India's small businesses, artisans, and startups to access global markets through e-commerce, I am pleased to announce complete removal of the current value cap of 10 lakh rupees per consignment on courier exports. In addition, handling of rejected and returned consignments will be improved with effective use of technology for identifying such consignments. I propose to revise provisions governing baggage clearance during international travel to address genuine concerns of passengers. The revised rules will enhance duty-free allowances in line with the present-day travel realities and provide clarity in temporary carriage of goods brought in or taken out. There are honest taxpayers who are willing to settle disputes by paying all their dues, but they get deterred due to negative connotation associated with penalty. They will now be able to close cases by paying an additional amount in lieu of penalty. Honorable Speaker, sir, with this, I commend the budget to this august House. Jai Hind. One and a half hours. आइटम नंबर 3 माननीय वित्त मंत्री जी। Item number 2, sir. 3। Sir, with your permission, I rise to lay on the table of the following statements under Section 3, 1 of the Fiscal Responsibility and Budget Management Act of 2003. Medium-term fiscal policy, fiscal policy strategy statement, and macroeconomic framework statement. आइटम नंबर 4 माननीय वित्त मंत्री जी। Sir, with your permission, I move for leave to introduce the Finance Bill 2026. प्रश्न ये कि विधेयक को पुनर्स्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाए। जो सदस्य इस पक्ष में हाँ गए, जो सदस्य विरोध में ना गए, मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में, हाँ वालों के पक्ष में अनुमति प्रदान की जाती है। माननीय मंत्री जी, अब विधेयक पुनर्स्थापित करें। Sir, I introduce the bill. माननीय सदस्यगण, आपको सूचित किया जाता है कि माननीय वित्त मंत्री जी के बजट भाषण की कॉपी पब्लिकेशन काउंटर पर ली जाती है। बजट भाषण और बजट से संबंधित दस्तावेज आपके मोबाइल फोन और मेंबर पोर्टल्स पर ही उपलब्ध है। सभा की कार्रवाई कल सोमवार दिनांक 2 फरवरी 2026 को प्राप्त 11 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। तो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण लगातार 9वीं बार बजट पेश करती हुई आई। तमाम घोषणाएं वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की ओर से की गई। बता दें कि यहाँ कई सेक्टर्स में उम्मीद यहाँ देखी जा रही है। बता दें कि बजट को लेकर 9वीं बार लगातार बजट की 2026 की जो बड़ी घोषणाएं हैं उनमें मालगाड़ी के लिए नया कॉरिडोर और इसी के साथ ही इंफ्रा पर बड़ा खर्च यहाँ सरकार की ओर से किया गया है। रेयर अर्थ और कॉरिडोर, केरल, तमिलनाडु और ओडिशा में दुर्लभ खनिजों के लिए विशेष कॉरिडोर बनाया जाएगा। दवाइयों के क्षेत्र में शक्ति 10,000 करोड़ के निवेश के साथ बायो फार्मा शक्ति योजना भी शुरू होगी और इसी के साथ ही चिप मैन्युफैक्चरिंग पर भी इस बजट में जोर दिया गया है। बता दें कि यहाँ भारत अपना सेमीकंडक्टर मिशन ISM 2.0 लॉन्च करेगा और इसी के साथ ही इलेक्ट्रॉनिक्स पर भी जोर दिया गया है। मोबाइल और अन्य इलेक्ट्रॉनिक्स के जो कल पुर्जे हैं उन्हें बनाने के लिए यहाँ बजट दिया गया है। रणनीति, मैन्युफैक्चरिंग, साथ ही पुराने उद्योग और छोटे उद्योग, इंफ्रास्ट्रक्चर, सुरक्षा और स्थिरता और साथ ही शहरों का विकास, इस पर भी इस बजट में खास तौर पर यहाँ ध्यान दिया गया। उस बीच एक बड़ा अपडेट जहां वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट पेश कर दिया है। वित्त मंत्री ने आम बजट 2026-27 बजट पेश किया। बायोफार्मा को 10,000 करोड़, सेमीकंडक्टर को 40,000 करोड़, EMS PLI को बढ़ाकर 40,000 करोड़ कर दिया गया। देसी कपड़ों के लिए विशेष मदद दी गई है। मेगा टेक्सटाइल पार्क बनाया जाएगा। कंटेनर निर्माण के लिए 10,000 करोड़ यहां बजट में दिए गए हैं।
तो बड़ा अपडेट यहाँ बता दें कि कई घोषणाएं निर्मला सीतारमण की ओर से की गई। बजट के जो 3 मुख्य विजन हैं, रफ्तार, क्षमता और सबका साथ, उन पर यहाँ विशेष फोकस सरकार का रहा है। बता दें कि अर्थव्यवस्था पर भी सरकार का रिपोर्ट कार्ड यहाँ पेश किया गया। बजट पेश करने से पहले वित्त मंत्री यहाँ साफ तौर पर राष्ट्रपति से मिलने पहुंची। उनसे मुलाकात करने के बाद यहाँ कई बड़ी घोषणाएं वित्त मंत्री की ओर से की गई हैं। देसी कपड़ों के लिए विशेष मदद दी जाएगी, मेगा टेक्सटाइल पार्क बनाया जाएगा और इसी के साथ ही कंटेनर निर्माण के लिए 10,000 करोड़ यहाँ दिए गए हैं। 2026 की बड़ी घोषणाएं और 6 बड़े क्षेत्रों पर सरकार का फोकस रहेगा। रणनीतिक मैन्युफैक्चरिंग, पुराने उद्योग, छोटे उद्योग और इंफ्रास्ट्रक्चर, साथ ही सड़कों, रेलवे और अन्य बुनियादी ढांचों को भी जबरदस्त मजबूती देना यहाँ सरकार का लक्ष्य रहेगा। सुरक्षा और स्थिरता, देश में लंबी अवधि की आर्थिक सुरक्षा सुनिश्चित करना और इसी के साथ ही शहरों का विकास, इस पर भी सरकार का फोकस रहेगा। बता दें कि शहरों को व्यापार और आर्थिक केंद्र के रूप में विकसित करना सरकार का लक्ष्य रहेगा और साथ ही साथ प्रोडक्टिविटी बढ़ाकर आर्थिक विकास की गति को तेज करना, लोगों की काबिलियत को निखारना ताकि वो देश की तरक्की में भागीदारी बने और इसी के साथ ही हर परिवार और क्षेत्र के पास कमाई के पर्याप्त संसाधन और मौके हों। रोजगार पर विशेष ध्यान सरकार की ओर से दिया गया है। फोकस रोजगार पर किया गया है और इसी के साथ ही अर्थव्यवस्था पर सरकार का रिपोर्ट कार्ड भी पेश हुआ। आत्मनिर्भरता, ग्रोथ रेट और इसी के साथ ही 12 साल का जो सफर रहा, उसे वित्त मंत्री ने पिछले 12 सालों में भारत की अर्थव्यवस्था स्थिर रही और महंगाई काबू में रही, ये बताती हुई नजर आए। हमारे साथ हमारे कंसल्टिंग एडिटर गोविंद ठाकुर जी जुड़े हुए हैं। गोविंद जी, जिस तरह से लगातार पिछले साल बजट पेश किया गया था, उससे लोग संतुष्ट नजर नहीं आए थे। इस साल अगर बजट की बात की जाए तो कई बड़ी घोषणाएं यहाँ सरकार की ओर से की गई हैं। क्या लगता है कि आम आदमी को सीधे इसका फायदा मिलेगा, आम आदमी संतुष्ट होगा इस बार के बजट से? पूनम, देखिए, बिल्कुल जिस तरह से सीतारमण ने ये बजट पेश की है, उम्मीद की जा रही थी कि इस तरह के ही बजट होंगे, क्योंकि इससे पहले प्रधानमंत्री ने कहा था रिफॉर्म्स एक्सप्रेस आने वाला है जी। तो रिफॉर्म एक्सप्रेस की मतलब ये हुआ कि इन्होंने जितने भी सेक्टर है भारत में उस सब पर फोकस किया है और इस फोकस पर जो उन्होंने किया है उस पर अगर नज़र डालें और उस पर विश्लेषण के तौर पर देखें तो उसमें साफ दिखता है कि ये सारा का सारा रिफॉर्म रोजगार बढ़ाने पर जोर दिया गया है। देखिए, सेमीकंडक्टर पर 40,000 करोड़ रुपया देने का मतलब ये हुआ कि भारत में सेमीकंडक्टर के उत्पाद बढ़ाए जाएंगे, जो अभी चाइना और दूसरे देश इसको लेकर सबसे आगे बढ़े हुए हैं और अब भारत सेमीकंडक्टर को लेकर आगे बढ़ने की लगभग पहले से शुरू तो है ही, लेकिन उस पर 40,000 करोड़ देने का मतलब हुआ कि इसको और अधिक बढ़ावा दिया जाएगा और अगर सेमीकंडक्टर यहाँ बनने लगता है ढंग से तो इसमें रोजगार काफ़ी बढ़ेंगे। और इसके बाद पूनम, एमएसएमई पर भी जोर दिया जा रहा है, क्योंकि एमएसएमई पर 10,000 करोड़ टॉपअप की बात कही गई है, लेकिन उससे पहले जो बजट पहले जो प्रावधान उसमें चल रहे हैं वो चले आ रहे हैं। मतलब ये है कि जितने मझोले जो रिफॉर्म कंपनी है और उसको आगे बढ़ाने के लिए भी सरकार आगे बढ़ रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात है पूनम इसमें कि कई सारे कॉरिडोर बनाने के लिए उन्होंने अपना प्रस्ताव दिया है, आश्वासन दिया है देश को कि हम हर एक क्षेत्र में कॉरिडोर बनाने जा रहे हैं। पीपीपी मॉडल पर होगा ये सारा काम। पीपीपी मॉडल का मतलब हो गया प्राइवेट पब्लिक सेक्टर, यानी कि सरकार और प्राइवेट दोनों मिलकर इस पर काम करने वाले हैं। तो ऐसे में किसी भी क्षेत्र में हो तो ये जो प्रयोग किया जाता है वो लगभग सफल होता है, क्योंकि इसमें प्राइवेट के भी कंपनी के पैसे होते हैं तो सरकार के भी होते हैं और ये आगे बढ़ते हैं तो इसमें रोजगार भी मिलते हैं। देखिए, कृषि क्षेत्र में उन्होंने भी बहुत बड़ी बात कही है कि कृषि क्षेत्र को बढ़ावा दिया जाएगा, क्योंकि जब इससे पहले हम लोग बातचीत कर रहे थे पूनम, तो उसमें यही था कि भारत जो है यूरोपियन संघ महासंघ से उन्होंने टीटी की है और व्यापार को लेकर। तो अब यहाँ पर भारत सरकार को ये जोर है कि हमें उत्पादकता में और आगे बढ़ने हैं, यहाँ के उत्पादन क्षेत्र को और अधिक बढ़ाने हैं, खाद्य पदार्थ को और अधिक बढ़ाने हैं और औद्योगिक संस्थान को आगे बढ़ाकर निर्यात को आगे बढ़ाना है। टैक्स स्लैब को लेकर ये चर्चा की जा रही थी कि टैक्स स्लैब में राहत लोगों को मिलेगी, लेकिन यहाँ टैक्स स्लैब में किसी तरह की राहत लोगों को मिलती हुई नजर नहीं आई है। देखिए, टैक्स स्लैब की बात करें तो पिछले साल भी बहुत अच्छा उन्होंने दिया था और उसमें लोग संतुष्टि उस समय, देखिए याद करिए पिछले साल को, तो लोगों ने कहा था बहुत अच्छा और अच्छे खुशी हुई थी।
अब हर साल टैक्स स्लैब में बदलाव करना तो कहीं ना कहीं भारत सरकार को ये भी देखना पड़ता है ना कि पैसे आएंगे कहाँ से, अब फिर पैसे जाएंगे कहाँ। तो ऐसे में उनकी जो राजकीय घाटा है उसको कम करने के लिए सरकार ने इस बार टैक्स में बदलाव नहीं किया है। तो 12 लाख का जो इनकम टैक्स से छूट है वो वही बने रहेंगे, और जो सैलरी पैसा के लोग हैं उन्हें 75,000 ऊपर से टॉप अप और दिया है, यानी 13 लाख रुपए पर उनको कोई टैक्स नहीं लगेगा। 2 स्लैब उस पर रखा गया 24,000 लाख तक का, तो उसके बाद 30% उसको लगते हैं। हम उम्मीद करते थे कि बहुत मांग हो रही थी कि जो दूसरा स्लैब है जो 30% के जो लगते हैं उस पर, उसको थोड़ा सा और अधिक बढ़ाया जा सकता है, यानी 30 लाख किया जा सकता है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो सरकार को ये देखना पड़ा है कि अगर उसको बढ़ा दिया जाता है तो इसमें घाटा जो है, राजकीय घाटा उसमें बढ़ेगा। तो ऐसे में अब उस पैसे को लेकर इस बार, जैसे कि मैंने इससे पहले हम लोग बातचीत कर रहे थे पूनम, उसमें यही कहा गया था कि टैक्स को घटाने से अच्छा है कि उत्पादकता पर बढ़ाया जाए, लोगों को रोजगार मिले, लोगों का जेब में पैसा आए। तो क्या 13 लाख, क्या अगर 20 लाख भी हो जाएगा तो लोग टैक्स भरने में दिक्कत लोगों को नहीं होगी। चाहे उससे कम भी हो जाता है तो उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि रोजगार मिले, पैसा मिले, और देश में जो अपना जो उत्पादन है उसको आगे बढ़ाया जाए। तो इसको लेकर सबसे अधिक उस पर जोर दिया गया है। तो प्रधानमंत्री का ये कहना कि ये रिफॉर्म्स एक्सप्रेस आया, तो निश्चित रूप से अभी बजट के हिसाब से, प्रस्ताव के हिसाब से देखा जाए तो रिफॉर्म्स तो है, किसी भी क्षेत्र को नहीं छोड़ा गया। टेक्सटाइल में आप देख सकते हैं, टेक्सटाइल को लेकर जो किसान वहाँ आत्महत्या कर रहे थे, गुजरात से लेकर महाराष्ट्र तक, चाहे आप देख सकते हैं कर्नाटक तक, इसमें मध्य प्रदेश में भी कई सारी ऐसी घटनाएं होती रही हैं। तो उस पर उसको बदलाव करके उस पर जोर दिया जा रहा है। वहाँ किसानों के लिए हेल्प मिलेगा, वहाँ कई सारे कॉरिडोर खोले जा रहे हैं, तो उनको आगे बढ़ाने के लिए भी उन्होंने बहुत सारी बातें कही है वित्त मंत्री ने। बायो फार्मा के लिए देखिए, बायो फार्मा के लिए 10,000 करोड़ की व्यवस्था की है। तो इसमें यह है कि ये इसमें भी सरकार के जो पहले से योजना है उसको भी बढ़ाए जाने की पूरी कोशिश की गई। कॉरिडोर आप जाइए, रेलवे कॉरिडोर का आप देखिए जी, 7 हाई स्पीड रेलवे कॉरिडोर बनाए जाएंगे। मतलब साफ है, इसका क्या संबंध है? इसका संबंध व्यापार से है। तो भारत के लगभग सभी क्षेत्रों को इसमें पकड़ा गया है, चाहे नॉर्थ हो, साउथ हो, चाहे ईस्ट हो, वेस्ट हो, सभी जगहों पर कॉरिडोर बनाए जा रहे हैं। सारे के सारे वहाँ की जो उत्पादकता है उस कॉरिडोर के थ्रू बाहर भेजे जाएंगे, और वहाँ पर दूसरे देश जिससे हमारे साझेदार हैं, जिससे हमारे व्यापारिक संबंध है, बिल्कुल, यानी कि प्रोडक्टिविटी पर सरकार का ध्यान बजट के थ्रू जाएगा, क्योंकि जाहिर सी बात है, क्योंकि उत्पादन और कॉरिडोर का जिक्र जिस तरह से सरकार ने किया है, लक्ष्य आगे रहेगा। हमारे साथ हमारी संवाददाता अपराजिता भी जुड़ी हुई है। अपराजिता, बजट पेश कर दिया गया है, जिस तरह से उम्मीदें लगाई जा रही थी, हालांकि बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो सस्ती हुई हैं, तो वहीं कई चीजों पर महंगाई बढ़ेगी भी, जैसे शराब, स्क्रैप और खनिज जो मिनरल्स हैं उन पर महंगाई बढ़ती हुई नजर आएगी बजट पेश होने के बाद। बिल्कुल, देखिए पूनम, जिस तरीके से बजट पेश किया गया उसके पहले आप देख रही थी कि मिडिल क्लास ज्यादा उम्मीद लगा करके बैठा हुआ था कि उनको कुछ और राहत की खबर मिलेंगी। हालांकि पिछले बार मिडिल क्लास के लिए जो था 12 लाख तक के टैक्स नहीं देने तक की बातें की गई थी, तो पिछले बार राहत देखने को मिली। लेकिन इस बार जो सरकार थी उसने बजट में साफ तौर पर जो थीम रखा था विकसित भारत का, वही करके दिखाया है, और उन्होंने इस तरीके का बजट पेश किया है जिससे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, रोजगार के ज्यादा फायदे। तो आप देखेंगे कि पूरे बजट में पूरा का पूरा जो केंद्र था वो इसी पर था कि किस तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो, रोजगार हो। अब देखिए पूरी तरीके से जो बजट पेश किया गया उसमें 12.2 लाख करोड़ पूंजीगत खर्च का ऐलान किया गया है, यानी कि उसमें 7 रेल हाई कॉरिडोर की बात की गई है। इसके अलावा एमएसएमई, छोटे उद्योग जो हैं उनको भी बजट दिया गया है। फिर उसके बाद 3 कर्तव्य फ्रेमवर्क। तो कुल मिलाकर आप देखिए तो सरकार ने इस पर ज्यादा जोर देना जरूरी समझा है कि किस तरीके से रोजगार बढ़ेंगे, निवेश होंगे, बाहर में रास्ते खुलेंगे और उससे जो है आमदनी आएगी। मतलब पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पर काम किया गया है। उसके अलावा जिलों भर में जो है
गर्ल्स हॉस्टल खोलने की बातें की गई हैं। यानी कि सरकार ने चारों तरफ से ध्यान में रखते हुए एक बजट पेश किया है। हेल्थ हो, एजुकेशन हो, किसान हो, रोजगार हो, इन सभी पहलुओं को नापने की कोशिश की है। तो ऐसे में आप ये देखिए तो इंफ्रास्ट्रक्चर की बहुत ज्यादा बातें हो रही थी, विदेश में किस तरीके से जो विदेश नीति काम करती है उस पर किस तरीके से बजट जाएगा। तो इन सारे पहलुओं पर रखते हुए एक बजट बनाया गया है और जो एक सरकार बजट पेश कर रही थी, जो एक आय रखी थी कि इतनी इनकम है सरकार की, उसमें कहां कहां क्या निवेश हुआ जाएगा, तो कुल मिलाकर हर एक सेक्टर को उस हिसाब से जो है बजट देने की कोशिश की गई है। बिल्कुल अपराजिता, और इस बजट के बारे में अगर कहा जाए तो क्योंकि हर बार साड़ी का जिक्र निर्मला सीतारमण की होता है और ये रहा भी है कि जिस राज्य की साड़ी निर्मला सीतारमण पहनती है उसे ज्यादा तोहफा दिया जाता है, बड़ा तोहफा दिया जाता है। ऐसे में तमिलनाडु की साड़ी यहाँ पहनती हुई नजर आई निर्मला सीतारमण और तमिलनाडु पर फोकस भी किया गया है। हाई स्पीड ट्रेन का तोहफा तमिलनाडु और बंगाल को यहाँ दिया गया है। विशेषकर उन राज्यों पर ज्यादा फोकस रहा है अपराजिता जहां चुनाव है 5 राज्यों में। बिल्कुल बिल्कुल पूनम, देखिए ये जिस तरीके से शहरों को जोड़ने के लिए 7 हाई स्पीड रेल कॉरिडोर बनाया गया है, मतलब मुंबई से पुणे, पुणे से हैदराबाद, हैदराबाद से बेंगलुरु और फिर उसके बाद हैदराबाद से चेन्नई, चेन्नई से बेंगलुरु, मतलब कि पूरी तरीके से फोकस रखा गया है इस तरीके से जिससे तेज यात्रा, व्यापार और टूरिज्म को आसानी मिल सके। तो कुल मिलाकर के उस पर फोकस इसलिए भी रखा गया, एक तो चुनाव को लेकर के बार बार जो है लोग भी कयास लगाते हैं और ये कहा जाता है कि उन राज्यों पे ज्यादा जोर देने की कोशिश करती है केंद्र सरकार जहां पर जो है उनके लिए चैलेंजिंग होता है। अब देखिए बंगाल का चुनाव हो, असम का चुनाव हो, ये काफी चैलेंजिंग है। स्पेशली साउथ की बात कर ले, वहां पर भी चुनाव होने जा रहा है, यूपी में भी चुनाव है। तो ऐसे में एक बजट पर फोकस किया जाता है और वही की है केंद्र सरकार ताकि वहां के लोगों को फायदा भी मिल सके और जो है पूरी तरीके से उनको चुनावी फायदा भी मिल सके। तो इसमें दोनों काम हो गए, एक तो क्षेत्रीय विकास का भी बात आ गया सामने और ऊपर से सरकार को जो है चुनाव में भी ठीक है प्राजिता, लौटेंगे लेकिन उस बीच हमारे दर्शकों की बड़ी खबर बता देते हैं जहां बजट वाले दिन सोना चांदी में भारी गिरावट देखी गई है। 1.5 लाख रुपए प्रति किलो सस्ती हुई चांदी, 4 लाख रुपए से घटकर 2.5 लाख रुपए हुए। सोना भी 13,000 रुपए सस्ता हो गया है। सोना चांदी की कीमतों में बजट वाले दिन भारी गिरावट देखने को मिली है। लाइफ टाइम हाई पर पहुंची चांदी 3 दिन में ही 1.5 लाख रुपए से ज्यादा सस्ती हो गई है। दूसरी ओर सोने का भाव भी संभल नहीं पा रहा है और हर रोज भर भर कर टूट रहा है। गोल्ड रेट में भी करीब 9% की गिरावट यहां देखी गई है और ये 13,000 रुपए से ज्यादा सस्ता हो गया है। चांदी ने इतिहास रचते हुए पहली बार 4 लाख का आंकड़ा पार किया था। चांदी का भाव 4,20,000 रुपए के नए लाइफ टाइम हाई पर पहुंच गया था, लेकिन अगले ही दिन ये 1,28,000 रुपए की गिरावट के साथ गिरकर 2,91,000 रुपए प्रति किलो पर आ गई थी। आज 1 किलोग्राम चांदी की कीमत 2,65,000 रुपए पर आ गई है। इस हिसाब से चांदी की कीमत में करीब 1.5 लाख की गिरावट आई है। हमारे साथ हमारे कंसल्टिंग एडिटर गोविंद जी भी जुड़े हुए हैं। गोविंद जी, जिस तरह से लगातार सोने चांदी के दाम आसमान छू रहे थे, कई बार इसका जिक्र बजट सत्र में भी हुआ था कि लोग जिनके घर पर शादियां हैं बच्चों की, उनके माँ बाप बहुत ज़्यादा परेशानी में है और चिंता एक बनी हुई है। लेकिन जिस तरह से अब एक साथ दाम गिरे हैं सोने चांदी के, बिल्कुल देखिए सोने चांदी के दामों को अगर देखा जाए तो वैश्विक बाजार पर इसका सबसे बड़ा असर होता है। जिस तरह से ईरान, अमेरिका, रसिया, यूक्रेन, ये सारी युद्धें की जो चल रही थी, बातें हो रही थी कि अब आक्रमण होना है, तो विश्व युद्ध का एक आगाज हो गया था। तो विश्व युद्ध को हिसाब से देखते हुए सबसे जो सुटेबल जो वस्तु होती है वो सोना चांदी ही होते हैं, जो सारे देश अपने अपने हिसाब से उसको इकट्ठा करने लगते हैं, जिस कारण से और सबके सब जितने हैं एक तरह से अपने अपने देशों में उन्होंने इकट्ठा कर लिया। तो मार्केट में इसकी जो मांग थी वो कम हो गई। अब क्योंकि इसके बाद बढ़ गई थी, इसके बाद उसको हाई आप देखते प्राइस हो गया था। लेकिन जहाँ तक भारत की बात है, इस बजट की बात देखें तो अब जो लड़ाई की बात हो रही थी अब उस पर थोड़ी सी वो दूर होती चली जा रही है, क्योंकि जिस तरह से अमेरिका और ईरान ने एक दूसरे को बातचीत करने के लिए आपस में उन्होंने बात कही है, जो हम बात करने के लिए तैयार हो, तो इसमें अब दूर होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। तो इसमें अब ये है
कि सोना चांदी पर जो फोकस था अब धीरे धीरे नीचे गिरता हुआ जा रहा है। इसका मतलब कि डिमांड कम हो गई है और बात है कि 4 लाख रुपए किलो जो चांदी है कौन खरीदेगा जी। सोना जो है लगभग 2 लाख के आसपास पहुंच गए थे, कौन खरीदेगा? शादी ब्याह के मौसम है, ये तो बहुत दिक्कत है। जहां लोग 10 भरी मतलब देते थे तोले और 2 तोले में काम निकालेंगे, तो इसका मतलब है कि खरीदारी तो होगी नहीं, तो कीमत तो गिरेंगे। लेकिन भारत सरकार में जो बजट की तरफ से जो देखा गया है, एक संतुलित बजट बिल्कुल देने की गोविंद जी, और कोशिश की सोना गई है। चांदी इतनी ज्यादा रेट आसमान छू रहे थे कि जो दुकानें हैं वो खाली पड़ी थी और वहां के जो व्यापारी थे, सुनार थे, वो कहते हुए नजर आ रहे थे कोई खरीदना भी नहीं चाहता है क्योंकि दाम बहुत बढ़ गए। हमारे साथ मध्य प्रदेश के स्टेट हेड राजेंद्र सिंह जादौन जुड़ गए हैं। राजेंद्र, इस बजट में लगातार देखा गया है कि प्रोडक्टिविटी पर सरकार ने ज्यादा फोकस किया है, आम आदमी को क्या मिला है? देखिए, मैं आपको बता दूं कि जो सरकार ने बजट जो पेश किया है, क्योंकि ये नवा बजट है वित्त मंत्री का और एक लंबा बजट था, जिससे आम आदमी को ऐसा कहा जा रहा है कि महंगाई में थोड़ी राहत मिलेगी, क्योंकि जिस तरीके से सीतारमन ने जो कैंसर जैसी बीमारी के जो आंकड़े पेश किए हैं वो काबिल तारीफ थे, कि हमारे देश में राजस्थान जैसे राज्य में जो है कैंसर बड़ी तेजी से बढ़ रहा है, लेकिन सरकार जो है 12 साल से है, लेकिन कैंसर को जो है घटाने के लिए अभी तक कुछ स्थित नहीं कर पाई है। तो उन्होंने जो है इस साल जो है दवा फैक्ट्री पर रेट कम करती हैं, दवा का दबाव कम कर दिया है। दूसरी बात यह है कि कैंसर लेकिन राजस्थान में पूरी तरीके से फैल रहा है, जो राष्ट्रीय मानकों के अकॉर्डिंग 113 से ज्यादा बताया गया है। ये वित्त मंत्री का बयान है। उसके बाद जो कैंसर के जो हॉस्पिटल पीपी मोड पर बनने हैं उसके बारे में भी उन्होंने विस्तार से बताया है, पर दवा का जो भार है वो अब आम आदमी पर, कैंसर की जो दवाइयां हैं उसका भार थोड़ा कम कर दिया गया है। वो सस्ती 20 से 30% सस्ती मिलने की आशंका जो है उन्होंने जताई है और नोटिफिकेशन जल्दी जारी करने की बात भी कही है। तो दवाई खरीदने से महंगाई कम नहीं होती, सब्जी भाजी क्योंकि आम आदमी की जरूरत होती है, आटा दाल चावल, इनसे महंगाई कम होती है। लेकिन वित्त मंत्री ने जो है 5 से 20% जो विदेश यात्राओं का और एजुकेशन का जो टैक्स था उसको कम करके अब 2% कर दिया है। तो आप खाना कम खा सकते हैं पर विदेश जरूर जाइएगा घूमने के लिए। इस तरीके का जो बजट पेश किया गया है ये आम आदमी के समझ के बाहर वाला बजट है, लेकिन वो विकास का बजट माना जा रहा है, जिससे कई बड़े उद्योगपतियों को भी फायदा मिलेगा और जो करदाता है उनको भी फायदा मिलेगा। हालांकि कर में जो है कोई नया बदलाव नहीं किया गया है। उसके बाद अगर हम युवाओं की बात करें तो युवाओं के हाथ अभी भी खाली से नजर आ रहे हैं। वहीं गृहिणियों की बात करें तो ठीक है राजेंद्र, लौटेंगे आपके पास। हमारे साथ यूपी के ब्यूरो चीफ नितिन सिंह भी जुड़े हुए हैं। नितिन, युवाओं को, किसानों को और महिलाओं को लेकर इस बजट में जिक्र किया गया है। पिछले बजट की अगर बात कर ली जाए तो लखपति दीदी महिलाओं के लिए बजट में जिक्र किया गया था, ऐलान किया गया था, लेकिन अब सी-मार्ट एक नई योजना यहाँ महिलाओं के लिए लाई गई है सरकार की ओर से। देखिए, बिल्कुल साफ तौर पर अगर आम व्यक्ति के नजरिए से देखा जाए, युवाओं के लिए, गरीबों के लिए, महिलाओं के लिए, नौकर पेशों के लिए कहीं ना कहीं इस बजट से उनको काफी उम्मीदें थी। कई अगर नजरियों पर देखा जाए तो इस बार के इस बजट में उनको साधने का प्रयास किया गया है। लेकिन अगर महिलाओं की दृष्टि से देखा जाए या फिर उत्तर प्रदेश की दृष्टि से देखा जाए, क्योंकि उत्तर प्रदेश को और वाराणसी को सबसे ज्यादा फोकस किया गया है, कनेक्टिविटी को लेकर के फोकस किया गया है, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट को लेकर फोकस किया गया है। और जो सबसे अहम चीज है कि जो दवाएं हैं, जो फार्मा इंडस्ट्री है, वहां पर जो बड़ी बीमारी, गंभीर बीमारी होती थी उससे कैसे बचा जा सकता है और उसमें जो कारगर दवाएं हैं उन दवाओं के दाम कैसे कम किया जा सकता है, उस पर भी प्रयास किया गया है। दूसरी तरफ जो टैक्स पेयर था उसको काफी उम्मीद थी कि इस बार जो टैक्स का स्लैब है उसमें काफी हद तक कुछ और राहत मिलेगी, लेकिन सरकार ने उसमें ऐसा कुछ भी नहीं किया। टैक्स पेयर को अभी भी उसी स्लैब के जरिए टैक्स को पे करना पड़ेगा। लेकिन इन सबके बीच में जो गरीब लोग हैं या फिर जो ऐसे मध्यम वर्गीय परिवार के बच्चे हैं जो विदेशों में पढ़ाई करना चाहते हैं, या कोई ऐसा परिवार है जिनकी बीमारी का इलाज विदेशों में हो सकता है, तो उनको जो टैक्स देना पड़ता था 5% तक का, वो 2% तक कर दिया गया है। इसके अलावा अगर देखा जाए तो वाराणसी में काफी फोकस किया गया है, क्योंकि रेल जो हाई स्पीड ट्रेन चलनी है उसको लेकर के, या फिर जो पार्ट बनने हैं
विमानों के या फिर दूसरी चीजों के जो पार्ट बनने, जो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हो गया या चमड़ा का डेवलपमेंट हो गया कानपुर और आगरा के नजरिए से देखा जाए, तो कुल मिलाकर के उत्तर प्रदेश को इसलिए फोकस किया जा रहा है क्योंकि अगले साल चुनावी साल है उत्तर प्रदेश में, और उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से मांग भी थी कि इन चीजों की जो भरपाई है वो सरकार की तरफ से किया जाए। महिलाओं के लिए अगर देखा जाए तो महिलाओं को काफी हद तक उम्मीद थी कि इस बार के बजट, क्योंकि पिछली बार जो लखपति योजना आई इसमें कहीं ना कहीं जो महिलाएं थी वो चाहती थी कि इसको और बृहद किया जाए और इसको विस्तार किया जाए, और ये जो लखपति महिला योजना है, महिलाएं चाहती थी कि वो करोड़पति महिला योजना के तौर पर आई जाए, तो उस पर भी कहीं ना कहीं सरकार की तरफ से प्रयास किया गया है। खेती से अगर देखा जाए तो खेती में जो महिलाएं थी उनका साफ तौर पर कहना था कि खेती से जुड़े हुए प्रमुख उद्योग हैं, जिसमें जो गृह उद्योग हो सकते हैं, जिसमें पापड़ बनाने से लेकर हो गया या फिर आम का जूस बनाने का हो गया, अचार बनाने का, तो छोटे उद्योग है उन उद्योगों पर महिलाओं को बड़े पैमाने पर सब्सिडी मिली या फिर जो लोन मिल रहा है उन्हें वो आसानी से मिल सके, उस लोन में उनको सब्सिडी मिल जाए। तो इन सारी चीजों की उम्मीदें थी महिलाओं की। सरकार का प्रयास है कि इस बार के इस बजट में उन महिलाओं को भी तो बेहतर हद तक दिया जाए, युवाओं को हद तक दिया जाए, और उसके लिए ये जो बजट है ये काफी हद तक बेहतर बताया तो जा रहा है, लेकिन इसको क्रियान्वयन में लाना, इस पे कितना बिल्कुल नितिन, और एक और ध्यान देने वाली बात इस बजट में, क्योंकि यहाँ कंटेंट क्रिएटर्स पर सरकार ने बड़ा ध्यान दिया है। 15,000 जो स्कूल्स हैं उनमें 500 कॉलेजों में कंटेंट क्रिएटर लैब भी खुलेंगे, क्योंकि ये तो हमेशा से ही कहा जा रहा है कि सोशल मीडिया का जमाना है और ऐसे में सोशल मीडिया से हर बात यहाँ दूसरों तक पहुँचती है, और सोशल मीडिया पर जिस तरह से कंटेंट क्रिएट करने लगे हैं लोग, पैसा कमाने लगे हैं, ऐसे में यहाँ सरकार ने भी अब कंटेंट क्रिएटर्स के लिए फोकस यहाँ सरकार की ओर से किया गया है इस चीज पर। देखिए बिल्कुल साफ तौर पर टेक्नोलॉजी का जमाना है और ये टेक्नोलॉजी सिर्फ शिक्षा या फिर कंटेंट क्रिएट तक ही नहीं सीमित है। अब खेती में भी नवाचार के जरिए टेक्निक का इस्तेमाल, एआई का इस्तेमाल किया जा रहा है। सिंचाई में एआई के जरिए ये देखा जा रहा है, मैपिंग की जा रही है कि कहाँ पर सिंचाई की जरूरत है, एआई के जरिए, ड्रोन के जरिए सिंचाई की जा रही है। तो जब खेतों तक ये सारी सुविधाएं हो रही तो क्यों ना जो प्राथमिक विद्यालय हैं, जो विद्यालय हैं, वहां पर जो बच्चे आ रहे हैं उनको भी कैसे शिक्षा दी जाए, ताकि, क्योंकि देखिए ये भी नवाचार का ही एक चरण होता है, ये भी कहीं ना कहीं एक ऐसा चरण है कि अगर क्योंकि जो जमाना चल रहा है, जो मौजूदा हालात चल रहे हैं, अगर वो कंटेंट क्रिएट करते हैं, कंटेंट अच्छा है, तो जाहिर सी बात है कम एज में भी आज के समय पर बच्चे जो है उनका जो मेंटल स्टेटस है वो बेहतर हो रहा है, वो टेक्नोलॉजी से जुड़ रहे हैं, कमा भी रहे हैं। तो उसके लिए भी कैसे उसको बेहतर तरीके से, क्योंकि कंटेंट क्रिएट करना और कंटेंट सही दिशा में जा रहा हो, उसको उससे पॉजिटिव जो समाज है उसको भी पॉजिटिव रिजल्ट मिले और जो कंटेंट क्रिएट कर रहा है उसको भी पॉजिटिव रिजल्ट मिले, तो इसका ज्ञान होना बच्चों को बहुत जरूरी है। तो इस पर भी सरकार का फोकस है कि इन बच्चों को उस तरह की शिक्षा दी जाए, उसके बारे में बताया जाए, स्कूलों को कैसे बेहतर करना है। साथ ही तौर पर अगर देखा जाए तो स्वास्थ्य एक बड़ा मुद्दा रहा है उत्तर प्रदेश या फिर पूरे देश में देखा जाए तो जो हेल्थ सिस्टम है, जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हैं, जो सीएचसी हैं, वो कैसे बेहतर हो सकते हैं, कैसे आसानी से वहां पर एक छत के नीचे सारे टेस्ट हो सकते हैं, दवाएं आसानी से मिल सकती है। ये सारी जो उम्मीदें एक आम आदमी की, एक आम नागरिक की रहती है सरकार से, किसानों की रहती है, युवाओं की रहती है, उस पर सरकार का ये जो बजट आया है ये कहीं ना कहीं काफी हद तक कारगर बताया जा रहा है। और उत्तर प्रदेश के नजरिए से देखा जाए तो उत्तर प्रदेश में इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर के कनेक्टिविटी, रोड की कनेक्टिविटी, क्योंकि बताया जा रहा है कि कुछ ऐसे प्रमुख हाई स्पीड जो हाईवेज है वो भी वाराणसी से सिलीगुड़ी तक जाने वाले हैं। उसका भी जो प्रपोजल है वो रखा गया था बजट का, उसको भी कहीं ना कहीं उस पर भी निर्मला सीतारमण ने काफी हद तक ये बताने की कोशिश की कि अगर कनेक्टिविटी बेहतर रहेगी, एक स्टोर से दूसरे स्टोर की जो व्यापार है वो भी बढ़ेगा, टूरिज्म भी बढ़ेगा, आय भी बढ़ेगी। तो ये मिलाकर के वाराणसी और वाराणसी के साथ साथ जो बड़ा उद्योग अगर देखा जाए तो कानपुर हो गया, आगरा हो गया, इन जगहों पर कैसे बेहतर कर सकते हैं, युवाओं को जोड़ करके रोजगार आपको कैसे बेहद किया जा सकता है, इन सारी चीजों पर जो अमली जामा पहनाने का प्रयास लंबे समय से सरकार का चल रहा था। आज इस बजट के जरिए उन्होंने उत्तर प्रदेश को स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार, किसान, सारी जो उम्मीदें थी उस पर काफी हद तक बेहतर करने का जो प्रयास किया। बिल्कुल नितिन, यहाँ सरकार ने कई चीज़ों को लेकर फोकस किया है। स्टेट हेड एमपी के हमारे साथ जुड़े हुए हैं राजेंद्र सिंह जादौन। राजेंद्र, अगर कुल मिलाकर बात की जाए, क्योंकि यहाँ फोकस हर सेक्टर्स में सरकार की ओर से किया गया है, खासतौर पर जिन राज्यों में चुनाव हैं, लेकिन अगर देखा जाए तो कुल मिलाकर इस बजट के बारे में अगर बात की जाए तो आप किस तरह से देखते हैं इस बजट को?
देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको पूनम ये बता दूं कि जो अभी जो विदेश नीति जारी की है, विदेश नीति में जो जाने वाली टूरिज्म की अगर हम बात करें तो हाल ही में जो है रूस के राष्ट्रपति से जो है हमारे प्रधानमंत्री मिले थे और रूस को हमने 40,000 कामगार देने की बात कही है। तो अब ये कामगार जाएंगे कैसे, क्योंकि उनको पासपोर्ट और वीजा की जरूरत होती है और क्योंकि इतना बड़ा उनको टैक्स देना पड़ता था 5 से 20%, तो जिसको घटाकर अब 2% कर गया और हम कामगार सप्लाई करने वाले सबसे अच्छे देश बन गए हैं। दूसरी बात, हाल ही में संसद में प्रधानमंत्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो है ये घोषणा की थी कि अभी जो बजट में उन्होंने, बजट के पहले जो संसद सत्र चल रहा था उसमें उन्होंने ये कहा था कि लोगों की मांग है कि 16 साल से कम उम्र के बच्चों को सोशल मीडिया से दूर रखा जाए, जिस पर विचार विमर्श चल रहा है। तो दूसरी तरफ बजट में एआई जैसे तकनीकी साधनों को बढ़ाने की बात की गई है। तो कहीं ना कहीं जो बजट है वो एक आम आदमी की पहुंच से बाहर वाला बजट है। आम आदमी को इससे कोई राहत नहीं मिलने वाली है। जो आम आदमी सोच रहा था कि उसको बहुत कुछ मिलेगा, लेकिन हम तकनीकी के साथ साथ विकसित भारत की तरफ बढ़ रहे हैं और विकसित भारत की तरफ जब हम बढ़ते हैं तो महंगाई, या हम किसी भी चीज की विकसितता की तरफ बढ़ते हैं तो महंगाई चरम पर होती है। और जो बजट के पहले कहा जा रहा था कि सब्जी, दाल, चावल और इन सब पर इसका जो है भार कम होगा, तो भार कम जरूर हुआ है। आज देखने को मिल भी रहा है शेयर बाजार में कि लगातार चांदी और सोने के रेट गिर रहे हैं, जिससे आम आदमी का कोई लेना देना नहीं है। सोना आम आदमी की पहुंच से बाहर है, चांदी आम आदमी की पहुंच से बाहर है। आम आदमी को सिर्फ दाल, चावल और रोटी की जरूरत होती है, जो सरकार उसको राशन कार्ड के जरिए मुफ्त में दे रही है। लेकिन आम आदमी की तरफ से आम आदमी को इस बजट में कुछ भी नहीं मिला है। जो कुछ मिला है धन्ना सेठों को, व्यापारियों को, विदेश जाने वालों को और विदेश में जाकर पढ़ाई करने वालों को, विदेश में जाकर काम करने वालों को। एक आम आदमी का बच्चा कभी विदेश नहीं जा सकता है, उसे अगर जाएगा भी तो मजदूरी करने ही जा सकता है। तो जो इस पूरे बजट का जो पूरा अगर मेरे हिसाब से सार निकाला जाएगा तो आम आदमी की पहुंच से बहुत ऊपर का बजट बनाया गया है। पूनम, बिल्कुल राजेंद्र, बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि जब बजट पेश किया जाना था तो सभी को ये लग रहा था कि जो आम आदमी की थाली है उसमें कहीं ना कहीं वजन जो है वो कम हो जाएगा, भार जो है आम आदमी की जेब पर जो पड़ता है वो कम हो जाएगा। लेकिन जिस तरह से आपने कहा, बिल्कुल सही बात कही है कि आम आदमी को यहाँ ज़्यादा संतुष्टि नहीं मिली है बजट के जरिए। गोविंद जी, अगर जिस तरह से राजेंद्र कहते हुए नजर आ रहे हैं कि आम आदमी से बहुत दूर की बात है, क्योंकि ज़्यादातर फोकस यहाँ दूसरी चीजों पर सरकार की ओर से रहा है, चाहे वो टेक्निकल इशू हो, चाहे वो कस्टम ड्यूटी हो। समृद्धि की नींव रखने वाला बजट है। जी सर, उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें भी ऐड करी गई। आयुर्वेदिक इंस्टीट्यूट की बात की गई और कंटेंट क्रिएटर, उनके लिए भी जो है एक नहीं, देखिए बहुत सी चीज़ सस्ती भी हो, जैसे माइक्रोवेव है, ओवन है, मोबाइल फोन है, ईवी बैटरी है, जूते हैं, कैंसर से संबंधित दवाएं हैं, शुगर से संबंधित दवाएं हैं। ये सारी चीज़ों को कम करने की कोशिश की गई है। सबसे बड़ी चीज़ ये है कि जो अनुमान था 4.5 से नीचे राजकोषीय घाटे का, अद्भुत है कि 4.4 के आसपास राजकोषीय घाटा रहा है और अगले लक्ष्य को उन्होंने 4.3% राजकोषीय घाटे के उसमें किया है। मैं समझता हूं कि जो चैंपियन एमएसएमई बनाए जाने का जो प्रयोजन है या खेल इंडिया मिशन को बढ़ावा देने की बात है, हर जिले में महिला छात्रावास और औद्योगिक कॉरिडोर के निकट टाउनशिप बनाने की चीज है, एक बहुत दूरगामी बजट है। हाँ, करें। कैसे इस बजट को देख रहे हैं? क्या बजट की स्पेसिफिकेशन आपको दिखाई दे रही है? देखिए, पहली बात तो आज का जो बजट हमारी सरकार के द्वारा पेश किया गया है, ये 21वीं सदी के दूसरे क्वार्टर का, और जो क्वार्टर हम सबके लिए बहुत ज़्यादा मायने रखता है, क्योंकि 2047 जब हम एक विकसित भारत बनाने का जब हम जिक्र करते हैं, तो ऐसे में अब ये जो अगला क्वार्टर शुरू हुआ है 25 से लेके 50 तक का, यहाँ से अब हमें हर उस सोच को बल देकर आगे बढ़ना होगा जो इवेंचुअली 2047 में भारत को एक विकसित देश बनाने का काम करे। और अब अगर आप इस सोच के साथ इस बजट को अगर आप देखिएगा
तो आपको एहसास होगा कि किस तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर पे बल दिया गया है, रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर पे बल दिया गया है, अर्बनाइजेशन के ऊपर जोर दिया गया है, गांव शहर की दूरी को कम करने का इसमें प्रयास किया गया है, आत्मनिर्भरता पे बल दिया गया है, मैन्युफैक्चरिंग और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के हर एक वर्टिकल्स में, भले वो डिफेंस में हो, वो प्रोसेसिंग में हो, वो किसी भी क्षेत्र में हो, रेयर मिनरल्स में हो, हर क्षेत्र में जिस तरीके से आत्मनिर्भरता को कुंजी बनाकर इस बजट में उस व्यवस्था को और ज़्यादा मजबूत करने का प्रयास किया गया है। युवा शक्ति को केंद्र में रखकर जितने ये सारे वर्टिकल्स एक्सपैंड होंगे उतनी ही जॉब अपॉर्चुनिटीज़ भी क्रिएट होंगी। स्किलिंग पे बहुत ज़्यादा कंसंट्रेट पुनः किया गया है। फार्मिंग की अगर बात करें उसमें जिस तरीके से डाइवर्सिटी को एक्नॉलेज किया गया है, नहीं तो आप उसी को एक ही उत्पादन बार बार रखने की भी समस्या सरकार के पास इवेंचुअली होने लगेगी। तो कैसे डाइवर्सिफाई किया जाए कोकोनट, कोको, इन तमाम चीज़ों को जिस तरीके से बजट में रिकॉग्नाइज किया गया है, फिशरीज को और ज़्यादा ऑर्गेनाइज करके उस सेक्टर को एनहांस करने की बात हो, मैं मानता हूं कि ये 47 विकसित भारत के निर्माण के लिए उसकी एक मजबूत नींव को तैयार करने वाला एक बहुत ही विजनरी बजट है। और इसकी खासियत ये भी है कि 9वीं बार वित्त मंत्री जी ने इस बजट को पेश किया है। खासियत तो ये है कि उन्होंने 9वीं बार किया है, बट एक ही प्रधानमंत्री के अंदर उन्होंने 9वीं बार किया है। ये कंटिन्यूटी दिखाता है, स्टेबिलिटी दिखाता है सरकार की सोच में, सरकार की नीतियों में, जो कहीं ना कहीं वैश्विक स्तर पर भी हमारी पहचान को मजबूत करता है। इंपोर्ट एक्सपोर्ट्स को हम लोगों ने मजबूती देने की इसमें बात की है और ईज ऑफ बिजनेस के साथ साथ ईज ऑफ लिविंग पे इस सरकार का, हमारी सरकार का बल रहा है। रिफॉर्म एक्सप्रेस का जिक्र मेरे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी करते रहे और रिफॉर्म्स के माध्यम से जितना सरलीकरण हो सकता है सिस्टम का, वो करने का प्रयास किया। आज के बजट में भी आप देखें जिस तरीके से पहले के बजट और आज के बजट में समझने के लिए ज़्यादा था, चीज़ें ज़्यादा समझ में आ रही थी। पार्ट ए पार्ट बी जिसका जिक्र मैं सुबह से कुछ न्यूज़ चैनल पे भी सुन रहा हूँ, जिस तरीके से उसको भी इक्वली बैलेंस किया गया है ताकि सही में जो टेक्निकल पक्ष भी है उसको भी जनता तक सही ढंग से पहुँचाया जाए। तो मैं मानता हूँ कि ओवरऑल ये 2047 को मद्देनजर रखते हुए इस बजट को तैयार किया गया और इसके लिए मैं मेरी तरफ से, मेरी पार्टी की तरफ से माननीय वित्त मंत्री साहिबा का दिल से आभार प्रकट करता हूँ। क्या बोलना चाहेंगे? तो चिराग पासवान को आप सुन रहे थे। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, चर्चा लगातार जारी है।